ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବା ଯେ ବୈଶେଷିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର the importance of reading Srila Prabhupada's books. We're going to be talking about the importance of reading Srila Prabhupada's books. When Prabhupada first met his spiritual master asked him to speak and preach and share Krishna consciousness in English. And he was asked to go overseas and share Krishna consciousness in English. Prabhupada did not come to America until he finished writing the Srimad Bhagavatam. He didn't want to come without books. And he put an extreme amount of emphasis on his books. I don't know if you're aware of this, but when Prabhupada began his mission, he had very little time to write. Many people were coming. He was very busy in establishing his mission. And his main service was actually not to establish temples, but it was to write his books. And so he had a dilemma, how to do this. And he prayed to Krishna, Krishna, please allow me to wake up after a few hours rest so I can write these books. He had no other way to do it. He was too busy managing. There was too much on his mind. So he prayed to Krishna, and Krishna allowed him to wake up. After about 2 to 3 hours of rest, Prabhupada would wake up and he would translate and give his purports to all his books. So, now just imagine this. Prabhupada did that for you and me. He gave up his sleep. That's how important these books are. Now, I wanted to share with you my own experience of reading Srila Prabhupada's books. I feel that in Kali Yuga, our intelligence is being clouded and misguided by this material atmosphere. And Māyā, or the illusory energy of Krishna, is bewildering us in many ways. And my experience in reading Srila Prabhupada's books is that we get the intelligence to see how Māyā is working on us. We get the inspiration to always remember that this life is temporary, that we can become Krishna conscious in this life if we dedicate ourselves to it. In any effort that you make, you need whys. Why should I do this? If the whys aren't there, if there are not enough whys, there's not enough impetus or inspiration. Reading Prabhupada's books, you will get all the whys you should endeavor to be Krishna conscious. It's not always easy to be Krishna conscious, but when the whys are there, you remain determined even during difficulties. You may not want to do something, or you may think in the wrong way. Prabhupada's books will give you the inspiration, will give you the reason, will remind you of the importance of spiritual life, remind you of the priority of spiritual life. Practically everyone I know who came to Krishna consciousness to begin its practice came because they read one of Srila Prabhupada's books. And all the people that are still in the movement today doing well will testify it's because of Srila Prabhupada's books. And my own personal conviction is that Prabhupada knew that without his books, it would be nearly impossible for us to advance steadily in spiritual life. So I tell all devotees, as part of your daily practice of spiritual life, your sadhana, you have to include time for reading Prabhupada's books, even if it's only 10 minutes. But if you do it every day, you will see a marked difference in your consciousness. You will see how it affects you in such positive ways. You will see how you see the world differently, how you feel differently, how you have spiritual strength. And Prabhupada knew that when he wrote these books, that the people he's going to be preaching preaching to in the West are going to need these books to be successful in their spiritual life. So that's just the beginning, a little idea, a little history. And then the last thing I want to say is when Prabhupada was in America and his movement started growing, he put extreme emphasis on the publication of his books and distribution, because he felt that his books could revolutionize materialistic society. And he used to say, when I write these books, I feel like I'm creating a revolution, because he knew that sound vibration would go through the ear into their heart and things would change. And we could make the world Krishna conscious through the reading of his books. So his books are extremely important, not for us, but for the whole world. And I would encourage you to spend a little time every day. Set aside a time every day. This is going to be my time to spend with Srila Prabhupada and his books. And you just do that and you'll notice the extreme benefit that comes, and you'll notice a huge change in your own life and consciousness.
Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो वैशेषिक प्रभु कहले जे प्रभुपाद कर प्राइम ए मु रिसेंटली आ गोटे कोट मते पढिथिली इज ऑलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कर प्रभुपाद एक्चुअली प्राइम फोकस ताकर थिला बुक्स लेखे आ एटी वैशेषिक प्रभु मते कहले से पॉइंट जे प्रभुपाद देखन जते जा कले भी प्रभुपाद बही न लिखा जाय अमेरिका जाय ना आ प्रभुपाद सब किछि ता बही रे लिखि कारण प्रभुपाद जतो इनिशियली गले कोन जगह को तो से देखिले जे मु केतळे ले भी माने केते दिन रही ठीक नहीं तो प्रभुपाद से कही देले जे तुमे माने कंटिन्यू करियो आ को बेसिस रे कंटिन्यू करियो ना बुक्स रे बेसिस ए भला प्रभुपाद समस्त को आश्वासन देकी जाइछि बुक्स तो मु भी रेगुलरली पढुछि बोली मु कहि परिबिनी किंतु निश्चय हमर इच्छा रहया दरकार कृष्ण समय हमको निश्चय देबे तो गोटे बहुत बढ़िया सिस्टम फॉलो करते हमर भक्त मान किछि जण देखछि से माने कहते दिथर तो प्रसाद मिनिमम पाइबु तो प्रसाद पाइला बेले से बही धरी पळांती 10 मिनिट माने जहाले भी पढि देबे पढला पर खाइबे तो सेटा गोटे प्रैक्टिस रे पढि जाय गोटे सिस्टम सेटा जे जहाले भी 10 मिनिट तो पढिबी आ गोटे हला करंती कि जण जे से माने वीकली कोटा सेट करंती वीकली पढंती एति समय दिने सब दिन हबन जदी वीकली तो एटलीस्ट हबो गोटे गोटे दिन मैराथन स्टडी करंती एटा केते दूर संभव कहा सब पक्ष रे सेटा हम देखियो पडियो एबे हम ए जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एटा पढिया जाउ छे देखाउ छी ना स्क्रीन हाँ प्रभु जी प्रभु दृष्टि प्रभु जी दान रखते एक्चुअली प्रभुपाद एक्चुअली देखंतु गोटे नुआ जगह को गले सेठी शिष्य मान को ट्रेनिंग करिया बेले प्रभुपाद को तांको चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दबार अछि प्रभुपाद देखले जे केते दिन जाय मो चैतन्य चैतन्य तो ट्रांसलेशन शेष करिवि कहि होबन केते दिन लागि पारे मो केते दिन अछि भी जणा नै तो कृष्ण डाकी देबे तो संगे संगे प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कंपाइल करंती प्रभुपाद कोन जे आगो एटा तो जानंतु चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा के सिखंतु जोटा ओडिया रे चैतन्य शिक्षा अमृत एवं से बड़ी कृष्ण बुक 10th कैंटो जाय प्रभुपाद पहुंच पारिबे कि नै ट्रांसलेशन रे कहि होबन तो सेटमेंट डायरेक्ट से कहले जे ठीक अछि एटलीस्ट मो 10th कैंटो रो समरी स्टडी टा लिखि दे तो ए बड़ी भाबरे प्रभुपाद माने ए दीटा बुक कंपाइल करछंती आ इथरे बहुत माने इंपोर्टेंट जिंस ऑलरेडी रखि दै छथि तो हमें प्रभुपाद को चरण रे श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण रे एवं समस्त वैष्णव मान को चरण रे प्रणाम निवेदन करी एटा स्टार्ट करिया ए बरे मु जेमि कहली बहुत दिन सब बुझी होनी आ हेले भी हमें चेष्टा करिया पढिया को कारण मु जने प्रभुपाद कहउतले ना कोन के जण महाराज कहउतले जे इवन तो ए बहिरो किछि दिन सब बुझी न हुए पढि चलत कारण चैतन्य महाप्रभु को कृपा हबो दिने हमें बुझिबा The introduction, originally delivered as 5 morning lectures on Chaitanya Charitamrita, the authoritative biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu by Krishnadas Kaviraj Goswami before the International Society for Krishna Consciousness, New York. The 5टा lecture Chaitanya Charitamrita ऊपर जो देखले से ऊपर introduction टा हिच तो introduction टा प्रथम पढ़िया The word Caitanya means living force, Charit means character, and Amrit means immortal.
As living entities, we can move, but a table cannot because it does not possess living force. Movement and activity may be considered signs of the living force. Indeed, it may be said that there can be no activity without the living. Although the living force is present in the material condition, this condition is not Amrit, immortal. The words Caitanya Charitamrita then may be translated as a character of a living force in immortality. तो केते बढिया प्रभुत कहउछन चैतन्य माने चेतना बा लिविंग फोर्स टा, चरित माने कैरेक्टर, अमृत माने जहार कैरेक्टर टा इमॉर्टल. लिविंग एंटिटीज प्रभुत कहउछन जे लिविंग एंटिटीज माने चला प्रचल करि पारंती किंतु माने मैटर करि पारेनी. तो मूवमेंट आ एक्टिविटी हला सब चेतनार प्रकाश. आउ प्रभुत एटी कहउछन जे बिना चेतना रे कौन जिनसर किछि एक्टिविटी हबनी. तो जदियो ए जड़ जगत रे ए चेतना रहिछि किंतु ए चेतना रहिले भी हम माने मृत्यु वरण करछे और हम शरीर समाप्त होछि माने एटा मृत्यु लोक. एटी कौन जिनस अमृतत्व. तो अमृतत्व लाभ करिया पई तो सेटा से कहउछन अमृतत्व माने कोन. अमृतत्वटा हला इठी हम चैतन्य चेतनतर गोटे ग्लिम्स पाइबा जे इठी हला एई भला गोटे कैरेक्टरिस्टिक हमें चेतनार जानिबा एई भला कैरेक्टरिस्टिक गुडा को जानिबा जोटा कि अमृतत्वरे तार कैरेक्टरिस्टिक माने above this platform, above this material platform, character of living force above this material platform or in immortality. But how is this living force displayed immortality? It is not displayed by man or any other creature in this material universe. For none of us are immortal in these bodies. We possess the living force, we perform activities, and we are immortal by our nature and constitution. But material condition into which we have been put does not allow our immortality to be displayed. आमने अमृत माने अमर आत्मा तो आत्मार मृत्यु होएनी ना, तो से भाव रे आमे अमृत अमर हलु. किंतु आमे आमे जगत रे हमको बारंबार ए जगत रे आसी कि जन्म ग्रहण करिया पड़छि. तो एटा हला इमोर्टैलिटी नुहा से. It is stated in Katha Upanishad that eternality and the living force are a characteristic of both ourselves and God. एटी कहउछन्ती जे इटर्नालिटी और लिविंग फोर्स एटा हमर भी रहिछि भगवान कर मध्ये रहिछि. कना नित्य नित्य नाम चेतनस चेतना नाम माने आमे मध्ये नित्य भगवान मध्ये नित्य. आमे मध्ये चेतनशील भगवान मध्ये चेतनशील. किंतु आमे गोटे लिमिटेड क्वांटिटी रे भगवान इनफाइनाइट क्वांटिटी. Although this is true in that both God and ourselves are immortal living beings, there is a difference. Still got a difference. Now, as living beings, we perform many activities, but we have a tendency to fall down into material nature. आमे बहुत कार्य करथाय पारो किंतु हमर भौतिक प्रकृति रे पड़ी जारो चांस अछि. भगवान कर चांस माने पतन रो चांस भगवान कर नै. Being all powerful, he never comes under the control of material nature. भगवान केबे भी जगतर कंट्रोल रे आसंती. ओ श्लोक रे कहले भगवत गीता रे मया दक्षिण प्रकृति देखो मोर ही अध्यक्षता रे ये प्रकृति कार्य करछि. मु ता अंडर रे नै, प्रकृति मो अंडर रे अछि. So indeed material nature is nothing but one display of his inconceivable energy. तो भगवान कर ही शक्ति रो प्रकाश ए भौतिक जगत. माया अध्यक्षेण कृष्ण को अध्यक्ष रे ये भौतिक प्रकृति कार्य करछि. An analogy will help us understand the distinction between ourselves and God. हमर भवन भीतर गोटे जो डिफरेंस रहिछि केन सेटा बुझियबो. From the ground we may see only clouds in the sky, but if we fly above the clouds we can see the sun shining.
From the sky, skyscrapers and cities seem very tiny. Similarly, from God's position, this entire material creation is insignificant. The living entity is also insignificant, and its tendency is to come down from the heights where everything can be seen in perspective. God, however, does not have this tendency. Supreme Lord is not subject to falling down into illusion or Maya, any more than sun is subjected to falling beneath the clouds. ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ହବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥର ଯାଉଛି କି ଧର ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛେ ତ ଆମେ ଯଦି ତଳେ ଠିଆ ହେବା ଆମକୁ କେବଳ ମେଘ ଦେଖାଯିବ, ମେଘ ଉପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମେଘ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ଜିନିଷ ସବୁ କେଉଁ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ? ବହୁତ ଟାଇନି। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଟାଇନି। ଆଉ ଜୀବକୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, है ना? ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ନା ଉପରେ ମେଘ ଉପରେ କଣ ଉଠୁଛି। ହଁ, where everything can be seen in perspective. So God, however, does not have this tendency. Supreme Lord is not subject to falling down into illusion. ଆମେ ସିନା ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେବେ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମେଘ ଆସିଲେ ମେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ ଯିଏ ମେଘ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତାକୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଢାଙ୍କି ପାରିବେ ନା? ତ ଯିଏ ମେଘ ଉପରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ ମାୟା ମୋହିତ କରିବ? କ୍ଲାଉଡ ର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବ, କାରଣ ସେ କ୍ଲାଉଡ ର ମାୟାର ଉପରେ, କ୍ଲାଉଡ ରୂପୀ ମାୟାର ଉପରେ। ତ ଏଟା ସେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। Impersonal philosophers, Mayavadis, maintain that because we fall under the control of Maya when we come into this material world, God must also fall under Maya's control. ये जो मायावादी माने कहती एटा एथिपा एक्चुअली आमे मायावादी मानको मायावादी होय कृष्ण अपराधी एथिपा को, कारण से माने कोन करंती, से माने कहती जे मायार कंट्रोल ले जेमति आमे माने पड़ी जाइछे सेमति भगवान मध्ये आसीकी मायार अधीन रे पड़ी जांती। किंतु भगवान जदि मायार अधीन रे पड़ी जांती ताले भगवान ठु श्रेष्ठ के हैला माया, ताले माया को भगवान बोली कहया कथा, सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम कहया कथा। भगवान को काई सुप्रीम कहछि? तो एटा हमर अंडरस्टैंडिंग जे भगवान को अंडर रे माया। तो जेहेतु मायावादी माने कृष्ण को कहउछन जे माने माया को अंडर रे, माया अंडर रे कृष्ण, तो सेथि में से माने कृष्ण अपराधी। Lord Chaitanya Mahaprabhu should therefore not be considered one of us. से आम भली जन व्यक्ति नो चैतन्य महाप्रभु। He is Krishna himself, the supreme living entity, and as such he never comes under the cloud of Maya. तो चैतन्य महाप्रभु किए ना भगवान कृष्ण निजे। ये जिनसटा आमे जदियो रियलाइज न करते पारु, किंतु एटा को हमको मानि न पड़िबो बहिटा एटलिस्ट पढ़ले बेले। कारण चैतन्य महाप्रभु को लीला हम पढ़िबा ना, चैतन्य महाप्रभु जे भगवान ता कि संदेह नाही, किंतु आमे फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्वायर करिबा। एबे जेतोला पढुचे वी शुड एक्सेप्ट, एंड ही नेवर कम्स अंडर द क्लाउड ऑफ माया। अच्छा गोटे सेकंड, he never comes under the cloud of Maya. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu kevele Maya ro under hai. Krishna, his expansions and even his higher devotees never come under the clutches of illusion or Maya. Krishna kono tako शुद्ध भक्त माने मध्ये ए माया रो कंट्रोल रे आसंती, माने माया रो ये रे आसंती, माया रो अंडर रे आसंती। Lord Chaitanya came to the earth simply to preach Krishna bhakti, love of Krishna. In other words, he is Lord Krishna himself, teaching the living entities the proper way to approach Krishna. He is like a teacher
who seeing a student doing poorly takes up a pencil and writes saying do it like this A B C. तो एक्चुअली जोटा आसिल गौर गोविंद स्वामी महाराज बारंबार कहती ताको लेक्चर रे जे कृष्ण निजे उपदेश दे गले भगवत गीता रे जोटा प्रीतिश प्रभु कहउथले भगवत गीता पढिबा तो उपदेश तो दे गले कृष्ण किंतु कृष्ण डिड नॉट टीच अस कि कृष्ण अर्जुन को निज एग्जांपल द्वारा एते माने बहुत शिखे ना देते उडा अर्जुन से सिचुएशन पड़थिले समस्त से सिचुएशन तो सेही भली भाव रे कृष्ण केवल तांको टीचिंग सा देले किंतु प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द्वारा चैतन्य महाप्रभु सिखेबे तांको जीवन रे एप्लीकेशन करेकी है ना तो चैतन्य महाप्रभु एबे निज जीवन रे भक्त भाव अंगीकार करिकी आसीबे भगवान कृष्ण भक्त हेके आसीबे आसीके एटी कोन करिवे ना जो माने जो स्टूडेंट माने एबे जानि पारनांती सिखि पारनांती जा फले से माने चैतन्य महाप्रभु देखि के इंस्पायर हेबे आ आगे परियो भक्ति तमन चैतन्य महाप्रभु सेटा से को जेटा कंपेयर करियो जेतोल गोट पिलाटे बहुत पुअर माने खराब कोन माने जहारे ते एडवांस नॉलेज नहीं तो ताकू कोन करिवे टीचर हाथ धरी लिखेबे तो चैतन्य महाप्रभु से बेले हाथ धरी लिखिया पई आश्चर्य हम ए बी सी ए बेले हाथ धरी के भक्ति रो पाठ पढिया को आश्चर्य हम तो करि परिबुनी खाली कृष्ण को उपदेश सुनी केमिति करिवो सेटा देखिया को आश्चर्य. From this, one should not foolishly think that the teacher is learning his ABC. The teacher एबे जदि ABC लिखिबे त जाने कहबो टीचर को खाली ABC ही अच्छा हो जास. Similarly, although Lord Chaitanya appears in the disguise of a devotee, we should not foolishly think he is an ordinary human being. We should always remember that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself or God, teaching us how to become Krishna conscious, and we must study him in that light. तो ये भले भाव रे हमको ये चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाटा को ग्रहण कर जैसे निजे भगवान किंतु भक्त रूप रे आछंती. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Give up all your nonsense and surrender to me. I will protect you." And we say, "Oh, surrender? But I have so many responsibilities." And Māyā illusion says to us, "Don't do it. You will be out of my clutches. Just stay in my clutches, and I will kick you." तो माया एबेले हमको बांधी के रखुछ, हमको सरेंडर करियो दउनी. It is a fact that we are constantly being kicked by Māyā, just as a male ass is kicked in the face by the sea ass when he comes for sex. तो बारंबार ass kick खाए, माने जो मैंने सी एस कुछ से जो तोड़ जाए अप्रोच करे हेले भी से बारंबार तापा हो जाता है. Similarly, cats and dogs are always fighting and winning when they have sex. Even an elephant in a jungle is caught by the use of a trained sea elephant who leads him to the pit. We should learn by observing these tricks of nature. तो हमें इस सब शिक्षा ग्रहण करेंगे ये माया रे पढ़िया कथा न सेटा कहउछन किंतु माया रे तो हम पढ़ी जाउ छै केमति एटु बाहरीबा एटा शिक्षा देबा पई चैतन्य महाप्रभु आछन. बच्चा जेति की थाउ इंट्रोडक्शन हम पढु छे बहुत सुंदर तो बुझी जंती. चैतन्य महाप्रभु ए भौतिक प्रकृतिर अंतर्भूत नहे एवं हम समस्ते श्री चैतन्य महाप्रभु का लाइफ रे सीखी परिबा एटा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा पई आछन दे. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. तुमको प्रभु जी एटा चैतन्य भागवतम पढु सुनेटा कोन को बहिटा पढु जंदी ना टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कटी एटा तार राइटर के प्रभुपाद. हां चैतन्य शिक्षामृत जे सेटा निजे डायरेक्ट को आनी जंदी माने जने की गुरु आचार्य लेक्चर ना सेटा को ट्रांसलेट करछ निजे हमें डिस्कस करलु ना माने एटा हला समरी चैतन्य चरितामृतर समरीटा प्रभुपाद लेक्चर दे जेंति 10th कैंटो स्टोरी फॉर्म रे प्रभुपाद कृष्ण बुक लेक्चर दे ओडिया रे कोन चैतन्य शिक्षामृत.
हाँ बंद कर सब बंद कर दो ओके वो और सब जॉइन कर ले अपन ये हाँ ठीक लेट जन कर अच्छा ठीक है गायिका माता जी ज्योति प्रभु सुरेश प्रभु तो थे नवीन माता जी प्रमोद प्रभु प्रीतिश प्रभु सुचना हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद ताले हमें कंटिन्यू करिए धन्यवाद प्रभु जी एते सुंदर बही हमको पढ़ौछन्ते आप तो रीडिंग करिया କଥା मु तो आरंभ रू कहि दीजिए बड़ा केते बुझियो मु कहि पर देखिबा आमे हां हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय